So quickly moving on to this one, this colorful notebook, if you can see right here. इसमें मैं हमेशा used to plot my timetable and what I have to study. Oh no, my bad. So see, I just made this, what is this? I'll just share later on. Then if you can see, what I have here is 120 rule of grammar. सो जस्ट पुरानी हो गई इसलिए ऐसी हो गई है. इसको मैंने बहुत ज़्यादा आई मेड श्योर दैट मैं इसको याद नहीं, एकदम टोटली एकदम रट्टा मार चुकी थी हर रूल, बिकॉज समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रट्टाफिकेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सो देर आर डिफरेंट रूल्स. इफ यू कैन सी रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड ऐसा करके 120 रूल्स हैं इसमें. एंड निमिषा मैम का ये रूल्स थे यूट्यूब पे, तो मैंने एक एक रूल समझ के उसको अपने अकॉर्डिंग आई हैव पेंड इट डाउन. लाइक रूल नंबर 1, ईच एंड एवरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी. सो ईच इज़ अ प्रोनाउन, एवरी इज़ एन एडजेक्टिव. देन उसको आप एक सेंटेंस में कैसे लेते हो. लाइक ईच जो होता है, इट इज़ यूज फॉर 2 और मोर. लाइक 2 और मोर के बीच में ही हम ईच यूज़ कर सकते हैं. बट एवरी ये 2 से ज़्यादा के लिए ही यूज़ होता है, 2 के बीच में नहीं होता. सो ये डिफरेंस था. तो ऐसे ऐसे अगर आप अपनी लैंग्वेज में, इफ़ यू आर इफ़ यू जस्ट लर्न अकॉर्डिंग टू यू, यू विल अंडरस्टैंड बेटर. देन रूल नंबर 2 इज बोथ एंड नॉट, दे कैन नॉट बी यूज टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस अगेन. सो बोथ राम एंड श्याम नहीं आएगा, राइट. राम मतलब बेसिकली आप इन दोनों को साथ में यूज़ नहीं कर सकते हो. तो neither Ram nor Sham are going to visit this place again. This is the correct thing, right? देन ऐसे ही मैं आपको हर एक रूल भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ इफ़ यू वांट, अगर आपको वीडियो से समझ नहीं आता है. बट मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हो ऐसी चीज़ों के. आप इफ़ यू कैन सी माई नोट्स, मैं प्रॉपरली अपने पेन से नोट्स बनाए हैं एंड देन मैंने उनको मार्क किया है अच्छे से, जो भी मुझे लगता है कि समझ नहीं आ रहा है. सो मेरे 11 लॉ ऑफ इन्वर्जन एंड इतने सारे रूल्स थे इसमें. सो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थ्रू नोट्स आप अपने आप यू कैन अंडरस्टैंड योर नोट्स. योर नोट्स कैन बी अंडरस्टूड बाई यू ओनली. अगर मैं आपको ये नोट्स की फ़ोटो भेज दूँ, मे बी यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अनलेस एंड अनटिल मैं आपको इस अपने नोट्स समझा रही हूँ कि क्या रूल्स थे. तो दीज आर दी रूल्स. ये सारे रूल्स थे. देन 103, if you can see 120 rules, they are ending here, certain words after which we don't use noun. So ये सारी चीज़ें, अब see, this is what I was saying. Now यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है certain words after which we don't use noun. अब if you don't know what noun pronoun is, आपको नहीं समझ आएगा. you should know ना noun होता क्या है. If you know noun क्या है, then you will understand कि we don't use noun, इसके बाद हम ये यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ये सारी चीज़ें पहले से आपको एक बेस बना के चलना पड़ेगा. नाउन प्रोनाउन ये सब आना चाहिए, उसके बाद ही आपको बाकी चीज़ें समझ में आएंगी, राइट. उसके बाद मैं नोट्स एंड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, दोज नोट्स वर मेड बाय मी. लाइक पहले मैंने बनाए थे एंड उसके सारे नए मैंने बनाए थे लाइक लेटेस्ट प्रेप में. दैट वाज पहला वाला प्रेप जो मैंने पहला दिया था. सो ये सारे रूल्स ही हैं एरर डिटेक्शन के, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है यूज टू राइट देम डाउन. एंड ये वर्ड्स हैं, आई यूज टू लर्न देम. देन अगेन ये पैरा जम्बल्स के रूल्स हैं थोड़े बहुत, जो भी एक ये भी निमिषा मैम ने ही मुझे एक क्लास में, आई मीन नॉट मुझे, सबको शी टोल्ड मी, शी टोल्ड एवरीवन, आई मीन नॉट ओनली मी. एंड दीज आर फ्यू रूल्स, सो यू कैन हैव अ लुक. एंड अगेन आई सेड, अब मैं आपको ये समझाऊंगी, देन यू शुड नो द बेसिक प्रोनाउन. नाउन ये क्या होता है, एवरीथिंग, इससे यू कैन गेट एन आइडिया, राइट. देन सी ऐसे नोट्स बनाती थी मैं. दिस अगेन एरर डिटेक्शन है ये सारा. एक्टिव वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस, हाउ यू टर्न टू पैसिव वॉइस, येट, वेयर टू यूज़ येट. देन दीज आर फ्यू एरर डिटेक्शन जो कि अलग से रखते थे मुझे. सो दीज आर माई नोट्स. आई एम शोइंग यू माई नोट्स बिकॉज यू शुड नो कि हम कैसे करते हैं, क्या करते थे हम लोग, how I used to study. Then these are uncountable nouns. Uncountable, you cannot count these nouns like furniture, machinery, advice, poetry. You cannot count them. So ये सारी चीज़ें you have to make notes because you cannot retain these things in your mind. Then comprehension passage. These are words again error detection. Elder, what is the difference between elder and older?
So elder is used for blood related, like blood related people in your life, and older is for non blood related. So this is one thing you should remember. It is very common and people are not able to figure out this particular thing. So okay, then connectors, you should know what connectors are. Connectors are very easy. I think they are easy, like I find them easy. So you should practice for connectors. Connectors come in mains, not in prelims. So nevertheless, there's this word nevertheless, in spite of, ke bawajood, right? So in spite of this, in spite of that, you have to do. Then these are root words. Root words by Nimisha ma'am. They are very helpful. You should know them. I wrote them down till here, then I just stopped writing them and I used to prepare it for myself. Then guys, the most important, fractions. Please take a screenshot if you want to. But your fractions, you should note them down. They are very helpful. I made this one from Ashish Sarkek video, and you can take the screenshot of this one if you don't have this. फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करके याद रखना है हमें क्या होता है, लाइक 3/8, what is 3/8? It is 37.5. So if you see 3/8, you convert it to 37.5. If you see 37.5, you should know it is 3/8. So you cannot learn all this eventually when you solve it. अब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, आई यूज टू सी 37.5 एंड इन माई सबकॉन्शियस माइंड आई न्यू, हाँ ये मैंने कहीं देखा, आई हैव सीन दिस. सो आई यूज टू ओपन दिस माई नोट्स एंड देन आई यूज टू सी ओके 37.5 is 3/8. So I used to take 3/8. So it's not like in one go you'll learn. You'll learn eventually, slowly, consistently. You need consistency for this. Then these are just scoring notes only. Same, you will learn new these are all tricks that I learned, quadratic, different ones. So you have to find your own way. And this is something I found, and it's very old. If you can see, it is not. It's from the first time started preparing for banking, and if you can see, my error detection was weak. My word meaning, this idioms are weak, sentence improvement. These are my weak chapters. How I know these are my weak chapters? These were my weak chapters because I gave section mock and I knew isme I am not able to score good. If you can see in quant, then I was good in quadratics, approximation, because I started doing speed maths. So I gained something into this. But arithmetic, I used to just run away from arithmetic. But then when I started giving sectional mocks and normal full mocks, I knew that dishonest shopkeeper, boat and stream nahi ho raha hai, CP nahi ho raha hai. So I knew these are my weak. Still, I used to get confused in boat and stream. So I just left this. I left this chapter. I didn't do this chapter. I was like, okay, out of 10 chapters, if I'm doing 7 chapters, enough. That is more than enough, right? Then if you can see reasoning, I'm good in sylogs, ये सारी चीज़ों में अच्छी हूँ. Then puzzle मुझसे circle नहीं हो रहा है, straight line नहीं हो रहा है, uncertain वाला मैं. Then uncertain मुझसे पहले नहीं होता था, then अब अच्छे से कर लेती हूँ. Why? It's all because you have to practice.